Hello, students. Tomorrow and yesterday, the sequence of our class always depend on today, as continuity of the online classes is just related to the relative refractive index. किसी इनकमिंग लाइट का अपवर्तनांक क्या होता है, रिलेटिव अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि हियर इज द टू मीडियम mu1 and mu2, that is the index of first medium and second medium, where mu1 is lesser than the mu2 as index. v1 and v2 are the speed of light ray in rarer to denser, and c is the speed of light in vacuum. As you know, the relative refractive index, it is when a light passes from one medium to the other, the refractive index of medium 2 relative to 1 किसी एक माध्यम की जो इंडेक्स है वह दूसरे माध्यम के प्रति रिलेटिव्स होता है. When light passes from one medium to other, the refractive index of medium 2 relative to the medium first, that can be written as mu1 1 mu2, that is index of second medium, that is mu2, and index of first medium, that is mu1. The speed of light, that is c in vacuum. Therefore, for the second medium index mu2, that qualify the light velocity in vacuum upon velocity of light in a medium, that is v2, and mu1 means velocity of light in vacuum and velocity of light in the medium. Their ratios that can be v1 by v2. किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रेयर टू डेंसर अगर कोई लाइट की रे प्रोपेगेट करती है तो दैट बेंडिंग टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर, एंड देयर रेशियो विल बी v2 mu2 upon mu1, but their velocity become v1 by v2 with respect to the light speed in the vacuum. Again, here repeated here, when a beam of light ray enters from one medium to another medium, their refractive index of medium 2 relative to the medium first. This medium 2 relative to the first medium, denser related to the rarer medium, and according to the
Definition of refraction: rarer to denser. Here angle I and angle R. Angle of I always greater than angle of R. Angle of R from rarer to denser. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी, इसलिए कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं वह डिपेंड करता है दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में पहले माध्यम, दूसरे माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में पहले माध्यम की इंडेक्स. थैंकिंग एंड मोस्ट वेलकम of your daily attendance in the online classes. Thank you. Thank you.